Hello, all the students. Good morning and welcome to ACE Cat once again. Yes, hi, all the students. Join for today's live session, and today we are going to have a wonderful discussion on parasummary. And parasummary becomes a very important area of verbal ability. At least two questions, and at most three questions we people can expect in CAT. So all the students join live, and today we are going to have a great discussion on parasummary. To begin with, I'll discuss some very important key concepts, what things you people will have to keep in mind so that we can ensure that we give accurate answers in parasummary. The pattern seems to be very simple, where a paragraph is given to us and we need to just read it and capture the essence of the passage. But anyway, students, the way the options are given to us, that actually creates a lot of confusion. कई बार बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमें सारे ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं and here is where we commit a mistake. Actually, we need to understand the subtle differences which are there in the various options. So anyway, all the students, everything I'll be discussing with you. सबसे पहले कुछ important tips मैं बताऊंगा and after that we are going to solve 5 questions which are based on parasummary. And while solving all the questions one by one, do listen to the complete logic, okay, the reasoning, the rationale which I'll be discussing with you, and then you compare with what you people have thought and what sir is explaining. इन दोनों को कंपेयर करके फिर आप डिसाइड करो कि हम कहाँ पर गलती कर रहे थे और कैसे मैं कैट में parasummary को बहुत इम्प्रूव कर सकता हूँ. और जिन बच्चों को मेरे साथ पूरी VARC पढ़नी है, and if a student wants कि सर आपका पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर हमको चाहिए, तो वो पूरी लेक्चर सीरीज IIMpossible पर एप्लीकेबल अवेलेबल है. IIMpossible.com पर you people can go or you can install the AceCat application. There are so many courses available. जो भी आपके लिए reasonable हैं, जो भी आपके लिए relevant है, please ensure that you people become the part of AceCat. Hundreds of students are preparing with us and immense confidence these students are able to develop. चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. सभी लोग मुझे एक बार बता दो जो भी लाइव हैं चैट बॉक्स में कि आर वी ऑल रेडी, तैयार हैं सभी स्टूडेंट्स? डन. स्टार्ट करें आज की जर्नी. एक बार मुझे फटाफट से स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में बता दो, आर वी ऑल रेडी फॉर टुडे सेशन? जो भी स्टूडेंट्स इसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे, प्लीज इंश्योर दैट पूरा वीडियो एज इट इज देखना. आपके पूरा वीडियो एज इट इज, ओके, एक एक पॉइंट को स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझना. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट parasummary को लेकर अगर कोई भी इशू है तो आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन you will be much better in this particular concept. Now see, tips for solving parasummary. सबसे पहला, understand the purpose of writing the passage. Why this paragraph has been written. A parasummary tests your ability to grasp the core idea of a paragraph and condense it without distorting the meaning. Wonderful. इस एक लाइन में स्टूडेंट्स पूरी parasummary का जो क्रक्स है वो समराइज होता है. We have to find out the core idea. We need to understand what is the main purpose of writing the paragraph. What is the main essence of the paragraph? What actually the main message is which the author is trying to communicate. And then students उस पूरे paragraph की summary हमें एक sentence में condense करना है. And then we will have to ensure that the meaning of the paragraph should not get distorted. So this is something which we need to keep in mind. अभी जब मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे वेरियस ऑप्शंस में मीनिंग को डिस्टॉर्ट किया जाता है. और बहुत स्लाइट वेरिएशन भी कई बार स्टूडेंट्स हमारे आंसर को गलत साबित करता है. So we will have to be very much careful in that. And moreover, you people have to understand what is the direction of the question. We need to find out that option which best captures the essence of the passage. So sometimes it happens like 4 ऑप्शंस में से जो आंसर हमें सही लगता है या 4 ऑप्शंस में से जो आंसर सही होता है, हो सकता है स्टूडेंट्स हम उससे भी पूरी तरह से एग्री ना हो. हमें लगता है स्टूडेंट्स कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन में भी कुछ और अच्छे चेंजेस होने चाहिए. बट आवर जॉब इज टू फाइंड आउट द मोस्ट करेक्ट आंसर. आवर जॉब इज टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑप्शन which captures the essence. So you people try to understand, even if my answer is for example second option, हो सकता है सेकेंड ऑप्शन से भी मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड ना रहूं, पर फिर भी स्टूडेंट्स अगर मैं बाकी ऑप्शंस के मुकाबले सेकेंड से ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ तो यस दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर. मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ वो सेकेंड ऑप्शन में भी
फ्लॉ निकालने की कोशिश करते हैं एंड दे डोंट गेट कन्विंस विद एनी वन ऑफ द ऑप्शंस एंड दे थिंक दैट कि सर ये पर्टिकुलर पैटर्न टफ है, हमें आंसर पता ही नहीं चल रहा है. Students try to understand the MCQs में what is more important is we need to identify the most correct answer. या यूं कहूं चारों ऑप्शंस अगर गलत हैं तो we need to identify the least incorrect answer. So this strategy we need to keep in mind. चलिए तो सबसे पहले students we need to understand what is the core idea of the paragraph. Coming on the second important point, it is not about rephrasing the last line. कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ, उन्हें लगता है कि सर पैरा समरी का बेसिक मतलब है हमको सिर्फ रिफ्रीज करना है लास्ट लाइन को. एंड कई सारे बच्चे पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते एंड दे जस्ट फोकस ऑन द लास्ट लाइन एंड दे थिंक दैट कि लास्ट लाइन दैट कंटेन्स द बेस्ट समरी ऑफ द पैसेज एंड दे जस्ट फाइंड आउट सच एन ऑप्शन जो उस लास्ट लाइन को रिफ्रीज करता है. बट स्टूडेंट्स बाय डूइंग दिस वी मे एक्चुअली कमिट अ ब्लंडर. So you people will have to read the paragraph thoroughly. And it is my honest advice to all the students. Even if your reading is very good, very profound, कम से कम 2 बार आप उस पैराग्राफ को जरूर पढ़ना. जब 2 बार इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तभी जाकर स्टूडेंट्स आपको क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग द पैराग्राफ. और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, हमें कोर आइडिया पर फोकस करना है. तो कई बार किसी एग्जाम्पल को या किसी इलस्ट्रेशन को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमें लगता है उस इलस्ट्रेशन को प्रेजेंट करना वाज द मेन पर्पस ऑफ द पैराग्राफ. तो यू पीपल डू अंडरस्टैंड. हो सकता है जो कोर आइडिया वो सिर्फ 2 लाइंस का हो, लेकिन जो एग्जाम्पल है वो 4 लाइंस का हो. दैट डज नॉट मीन दैट उस एग्जाम्पल को शेयर करना इज द मेन पर्पस. स्टिल यू पीपल विल हैव टू फोकस ऑन द कोर आइडिया. तो ये छोटी छोटी बातें हैं हम पैरा समरी में जरूर समझ कर चलें. नाउ कमिंग ऑन, it is not about picking sentences with fancy vocab. Students, आप देखोगे, generally I have seen, my experience is that ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें बहुत हाई फाई vocab है, ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें बहुत ज्यादा ऐसे कीवर्ड्स हैं which are directly given in the paragraph, possibly students वो correct answer ना हो. So our job is not to find out only such options which have got fancy vocab. Our job is to find out what is the key essence of the paragraph. So possibly students, such options may be the correct answers, but the same keywords are not there. And the options with the same keywords still may not be correct. So what is more important is, हमें सिर्फ keywords पर focus नहीं करना है. हमको ये देखना है, even if we are using the same keywords, क्या overall meaning उस option का वही है जो paragraph का है? So this is something which you need to understand. इसीलिए स्टूडेंट्स पैरा समरी में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल मत करना. इट इज़ एक्चुअली अ गेम ऑफ पेशेंस. वर्बल एबिलिटी में कई बार बच्चों को लगता है कि पैरा समरी कंपैरेटिवली इजी है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट द केस. और पैरा समरी में स्टूडेंट्स आप देखोगे गलती होने के पूरे चांसेस हैं. माय सजेशन इज लेट अस बी वेरी केयरफुल इन दिस. और हमें ओवरऑल मीनिंग पर फोकस करना है रादर दैन फैंसी वोकैब एंड जस्ट कीवर्ड्स. डन. It is about what is the author really trying to say. Absolutely. तो ये चीज मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ. So these 3-4 points, they are very important. Keep these points in mind. Now coming on, students, identify the structure of the paragraph. हमेशा you people try to understand. Okay, जब भी हम किसी पैराग्राफ को पढ़ें, always try to understand what is the structure of the paragraph, what is the main idea, what are the supporting details, and what is the tone and intent. My suggestion to all the students will be, always try to understand what is the tone of the author. Once you understand the tone of the author, I think students correct option को identify करना will become easier. तो क्या author critical है, analytical है, या फिर persuasive? I guess you people very well understand the various tones. So if you understand a few things, I think para summarize करना, para को summarize करना will be easy for us. But anyway, students, I do understand that is better said than done. हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली क्या मिस्टेक्स अपन कमिट करते हैं. चलिए एक छोटा सा टेबल है आपके सामने. That will actually give you a brief idea what things we need to avoid and what things we people should look for. हमेशा जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, please ensure that balanced representation is important. Okay,
extreme opinions not in the passage. You people have to avoid that. And all the students do understand. Our job is to just to find out what is the summary of the paragraph. Our job is to just to find out what is the main essence of the paragraph. So our personal bias, our personal prejudice, we people will have to avoid those. Second, author's viewpoint and tone. So minor details और examples or summaries इसे avoid करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी हम कोई क्लास लेते हैं, हो सकता है उस क्लास में हम 10 बातें और भी करें, बट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टेकिंग द क्लास? टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर कैट. तो यू पीपल डू अंडरस्टैंड. अगर आज की क्लास में मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि नेपाल में कल और परसों क्या हुआ था, अब नेपाल के बारे में स्टूडेंट्स इफ आई गिव यू सम इनसाइट, बट दैट डज नॉट मीन दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग द सेशन इज टू टॉक अबाउट नेपाल. सिमिलरली हो सकता है किसी भी पैराग्राफ में तो कंफ्यूज यू पीपल कुछ और रेफरेंस भी दे रखा हो, एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट जो की रेफरेंस है उसे मिस नहीं करना. तो इवन इफ a few other things may also be there which are related or which may not be related, but still you people have to be very careful about what is the overall essence, and that is the reason keep asking a question to you, what is the main purpose of writing the paragraph? So if you understand the main purpose, I think students getting the correct answer here will become easy for you. Just hold on, we are going to take some wonderful questions. Cause effect पर आप जरूर फोकस करें, और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूं. इफ यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट. स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड व्हेन आई टॉक अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई इफेक्ट होता है. स्टूडेंट जो पीपल अंडरस्टैंड, कोई भी घटना आपके सामने हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंड इन नेपाल, तो पॉसिबली उसके कुछ कॉजेस होंगे एंड डेफिनेटली उसके कुछ इफेक्ट्स भी होंगे. तो स्टूडेंट्स अगर हमें नेपाल को समझना है या किसी भी सिचुएशन को समझना है, एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा क्रिटिकल होता है, और एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा समझता है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ दैट एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दैट. तो एक बहुत अच्छा एनालिटिकल टूल है. आई थिंक स्टूडेंट्स इफ यू पीपल डेवलप दिस काइंड ऑफ अप्रोच, इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग possibly all the questions of CAT. So this is very good. And what is the flow of the argument? Must match the tone or exaggeration. We people should avoid. Neutral होना चाहिए. Comprehensive wording is important. Option ऐसा लेकर चलो जो उसे broadly cover करता है. कई बार ऐसा भी होता है किसी पैराग्राफ में the author is focusing on two things, and possibly जब अपन options पढ़ेंगे the very first option will capture the essence of the first thing. तो किसी स्टूडेंट को पढ़कर लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली ओके, बट इट मे बी पार्शियली करेक्ट. सो दैट इज द रीजन यू पीपल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. जो पार्शियली करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, हो सकता है वो करेक्ट आंसर्स ना हो, उससे बेटर चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हो. तो यू पीपल बी वेरी केयरफुल. पार्शियली करेक्ट ऑप्शंस वी शुड अवॉइड. ओके, एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनल व्यूज नॉट इन द पैसेज. तो फाइनली स्टूडेंट्स इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द करेक्ट आंसर, एक बहुत अच्छा तरीका, इफ यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पैरा टू योर फ्रेंड इन वन सेंटेंस, व्हाट वुड यू से? तो किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद व्हाट यू पीपल कैन डू इज, अगर मुझे अपने दोस्त को समझाना हो इस पैराग्राफ को एक लाइन में, एक सेंटेंस में, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? आई थिंक स्टूडेंट्स वो जो एक्सप्लेनेशन होगा दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर. एंड अमंग द 4 ऑप्शंस आप लोग पता करें कौन सा ऑप्शन उस एक्सप्लेनेशन से मैच होता है. तो इन दिस मैनर यू पीपल कैन जज द करेक्ट आंसर. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स यू पीपल कैन डेफिनेटली सी अमंग द 4 ऑप्शंस 2 ऑप्शंस को रूल आउट करना इज नॉट सो टफ. प्रॉब्लम होता है बचे हुए 2 ऑप्शंस में से टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. एंड हियर इज वेयर अ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स से वी ऑफन टेंड टू मार्क द रॉन्ग आंसर. आखिर हम गलत आंसर की तरफ अट्रैक्ट होते क्यों हैं? इसके पीछे स्टूडेंट्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द पेपर सेटर साइकोलॉजी. पेपर सेटर जब भी ऑप्शंस लिखेगा 2 ऑप्शंस में ऐसे लिखेगा जिसमें वो खुद बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा. अब जो बचे हुए 2 ऑप्शंस हैं उनमें से स्टूडेंट्स एक ऑप्शन वो ऐसा लिखेगा जो बिल्कुल सही है, और एक ऑप्शन वो ऐसा लिखेगा विच विल बी वेरी मच अपीलिंग, वेरी मच एंगेजिंग, बट दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. एंड दैट इज द रीजन वी विल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. द ऑप्शन विच इज वेरी मच अपीलिंग, बस उसी ऑप्शन को लेकर बी अ बिट क्रिटिकल. तो जो ऑप्शन आपको बहुत अपील करता है, पढ़ते ही लगता है
यस दिस इज द राइट आंसर। उसी को स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्रिटिकली इवेल्युएट करना एंड देन यू ट्राई टू गिव द आंसर। आई थिंक योर एक्यूरेसी विल डेफिनेटली इम्प्रूव। ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ some very good questions. So let me take the very first question now. Yes, this becomes the first question, and you people do understand CAT में जो questions आते हैं, not all the questions are genuinely tough. कुछ questions तो बहुत ही simple होते हैं. I want all the students who are live, if you people can give the answer but during the class itself. Okay, if you can give the answer, okay, तो chat box में मुझे बताओ what is the correct answer. And moreover, students, on a daily basis, almost we people are going to have the live sessions at 11:30. Tomorrow, I will be discussing on para formation. And उसके बाद students हम लोग day after tomorrow, Friday के दिन 11:30 पर live लेंगे, especially snap को लेकर. So English for snap and NMAT. And then students Saturday को 11:30 पर live रहेगा CAT 2026 के लिए. तो बस ensure करो कि 11:30 you people okay join us. Yes, shall we discuss now? स्टार्ट करें। चलिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेटर ऑन वीडियो फॉर्मेट में वॉच करेंगे। मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले पॉज करके खुद सोचो व्हाट इज द करेक्ट आंसर एंड देन लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन। ओके, एंड एक्सप्लेनेशन सुनते समय प्लीज एंश्योर दैट पूरे पेशेंस के साथ यू विल लिसन टू द लॉजिक व्हिच आई एम गिविंग। यहाँ पर इम्पेशेंट होना इज नॉट गुड। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ लिसन टू द आंसर। Collective statistical illiteracy refers to the widespread inability to understand the meaning of numbers. The very first sentence is always very important. आप देखोगे स्टूडेंट ज़्यादातर केसेस में the very first sentence that actually introduces the topic. I do understand किसी भी पैराग्राफ को समराइज करने में the first and the last sentence they play the most important role. But at the same time हमें पूरा ज़रूर पढ़ना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखो, जैसे ही मैं फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ता हूँ, कलेक्टिव स्टैटिस्टिकल इलिटरेसी रेफर्स टू द वाइड स्प्रेड इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नंबर्स। यू पीपल सी दैट बहुत सारे लोग होते हैं जो नंबर्स में चीज़ों को नहीं समझ पाते। एंड दैट इज व्हाट इट इज द कलेक्टिव स्टैटिस्टिकल इलिटरेसी। नाउ स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल लिटरेसी इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर एन एजुकेटेड सिटीजनशिप इन अ टेक्नोलॉजिकल डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट्स, ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत डोमिनेंट होती है, तो वहाँ पर इट बिकम्स अ प्री कंडीशन कि लोग स्टैटिस्टिकली लिटरेट बने, अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चंस। डू अंडरस्टैंड इवन दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल लिटरेसी ओनली। अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये नहीं होता सिर्फ नंबर्स में बात करना, बट यहाँ पर आदमी हमेशा क्रिटिकल होता है। अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंडिंग रिस्क and asking critical questions can also shape the emotional climate in a society so that hopes and anxieties are no longer as easily manipulated from outside, and citizens can develop a better informed and more relaxed attitude toward their health. The students, you people do understand the last three lines. It says that अगर students citizens risk को properly समझते हैं and critical questions if the citizens keep asking, so they shape an emotional climate, and because of this hopes and anxieties will no longer be manipulated from outside, and citizens ऐसे केस में ज़्यादा better informed होंगे and बहुत relaxed होंगे अपने health को लेकर। तो किस तरह से स्टूडेंट्स हम एक्सटर्नल मैनिपुलेशन को अवॉइड करें, ओके, किस तरह से हम लोग इमोशनल क्लाइमेट डेवलप करें, और किस तरह से स्टैटिस्टिकल लिटरेसी आज की तारीख में प्री कंडीशन है। तो दिस बिकम्स द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग द पैराग्राफ। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एनीवन? यस, अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर फोर्थ है और एक और स्टूडेंट का आंसर यहाँ पर सी है। डन। कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जिन बच्चों का आंसर यहाँ पर फोर्थ है, लेट मी फोकस ऑन दैट। कलेक्टिव स्टैटिस्टिकल लिटरेसी कैन क्रिएट a technological democracy resilient to external manipulation. Resilient का मतलब होता है किसी के खिलाफ खड़े हो जाना मजबूती के साथ, किसी को फेस करना। अंडरस्टैंड, बट यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड। फोर्थ ऑप्शन कहता है कलेक्टिव स्टैटिस्टिकल लिटरेसी कैन क्रिएट
a technological democracy. जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है statistical literacy is important. It is a precondition for an educated citizenship in a technological democracy. तो कहीं पर भी ये कहना कि it creates a technological democracy, I think स्टूडेंट्स ये वर्ड इस पैराग्राफ में जो लिखा है उससे थोड़ा सा मिसमैच होता है. तो दैट इज द रीजन मैं फोर्थ ऑप्शन को स्टूडेंट्स रूल आउट करूंगा. ये कहना कि इट क्रिएट्स अ टेक्नोलॉजिकल डेमोक्रेसी इज नॉट द करेक्ट आंसर. तो जिन बच्चों का आंसर फोर्थ ऑप्शन है आपके दे आर नॉट करेक्ट. नाउ आई सी दैट अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग थर्ड ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस टेक द थर्ड ऑप्शन फर्स्ट. Collective statistical literacy can protect a technological society from anxieties that can be easily manipulated by external forces. Now, you people try to understand. Collective statistical literacy can protect a technological society from anxieties. पहली चीज तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर केवल एंजाइटीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर होप्स एंड एंजाइटीज दोनों की बात कर रहे हैं. पहला पॉइंट. लेकिन मुझे लगता है इस पूरे पैराग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, दैट इज इमोशनल क्लाइमेट. तो मुझे लगता है थर्ड ऑप्शन पार्शियली करेक्ट है, बट थर्ड ऑप्शन से बेटर हो सकता है कोई और ऑप्शन जरूर हो. एंड यू पीपल डू अंडरस्टैंड हमारा मेन पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग द पैराग्राफ. व्हेन आई से स्टूडेंट यू पीपल हैव टू फाइंड आउट दैट ऑप्शन which best captures the essence. So students do understand third option is partially correct, but ये कहना कि this best captures the essence, I think students third option is not correct. अब स्टूडेंट्स दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेट अस रीड बोथ द ऑप्शंस. सेकेंड ऑप्शन कहता है कलेक्टिव स्टैटिस्टिकल इलिटरेसी कैन मेक द इमोशनल क्लाइमेट इन अ सोसाइटी. ओके, नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड क्या लिखा है. इलिटरेसी कैन मेक द इमोशनल क्लाइमेट इन अ सोसाइटी रेजिस्टेंट टू मैनिपुलेशन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये इलिटरेसी है कैन मेक द इमोशनल क्लाइमेट इन अ सोसाइटी रेजिस्टेंट टू मैनिपुलेशन द एक्सटर्नल फोर्सेस. क्या लगता है स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन? आई थिंक जिस तरह का सेंटेंस ये है कि स्टूडेंट्स हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है. ओके, एब्सोल्युटली. यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कहना कि जो स्टैटिस्टिकल इलिटरेसी है कैन मेक द इमोशनल क्लाइमेट इन अ सोसाइटी रेजिस्टेंट टू मैनिपुलेशन द एक्सटर्नल फोर्सेस. ओके, जबकि स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड अगर लिटरेसी होती, अंडरस्टैंड अगर लिटरेसी होती, ओके, रेजिस्टेंट होना, लिटरेसी creates an emotional climate and that emotional climate will actually help to avoid all the manipulation. That is what the message is. तो मुझे लगता है स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन जिस तरह से लिखा है it can be quite confusing, but anyway I'll read the first option, और अगर फर्स्ट ऑप्शन में I'm able to get the correct answer, well and good. Otherwise स्टूडेंट्स मैं बाकी ऑप्शंस को रिविजिट करूंगा. तो फिलहाल I have given you the reasons why third option and fourth options are not the correct one. Coming on the first one, statistical illiteracy renders the emotional climate in a society vulnerable to manipulation. Now you people try to understand. First and second mein, what is the major difference? First option also says statistical illiteracy, even this talks about statistical illiteracy. Renders the emotional climate, okay, can make the emotional climate. तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आप देखो दोनों ऑप्शंस ऑलमोस्ट द सेम है. In a society vulnerable to manipulation. अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर इलिटरेसी है, ओके, तो सोसाइटी विल बी vulnerable to manipulation. इसका मतलब है एक्सटर्नल मैनिपुलेशन विल बी पॉसिबल इफ द सोसाइटी इज vulnerable. तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, अगर स्टैटिस्टिकल इलिटरेसी है तो दिस विल एक्चुअली क्रिएट such an emotional climate in a society which will make the society vulnerable to manipulation. And students, when I talk about vulnerable to manipulation, इसमें hopes, anxieties सब कुछ include हो जाता है. जबकि स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन कहता है ये जो illiteracy है it will create an emotional climate in the society which is resistant to manipulation. Resistant का मतलब तो उसका विरोध करना, उसको withstand करना. जबकि स्टूडेंट्स illiteracy will make the society vulnerable, not resistant. Therefore, students, the correct answer is first option. Yes, so my answer is first option, and you people do let me know whether you agree with this option or not.
और मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ स्टूडेंट्स को, आप बहुत अच्छी तरह से देखिए, ऐसा नहीं है कि सर ने जो एक्सप्लेन किया उसको एक्सेप्ट ही करना है. Yes, if you want, you can disagree also. But if you disagree, you will have to think about the possible logic also. Anyway, students, there is no other close choice. Second option is not the correct answer because of the word resistant. Third option is not the correct answer because it is partially correct. And fourth option is not the correct answer because literacy can create technological democracy. This phrase is not appropriate. जबकि स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन बहुत क्लियर कट है, अगर इलिटरेसी होगी द सोसाइटी विल बी वल्नरेबल टू मैनिपुलेशन. तो स्टूडेंट्स माय आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. कम ऑन, जो भी स्टूडेंट्स लाइव है मुझे चैट बॉक्स में एक बार मुझे बता दें, डू यू एग्री विद फर्स्ट ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर और नॉट. एंड जितने भी स्टूडेंट्स जो बाद में इस सेशन को देखेंगे, प्लीज इंश्योर दैट पॉज करके अच्छी तरह से इसको वापस गो थ्रू करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सर एक्चुअली वांटेड टू से. स्टूडेंट्स एक एक ऑप्शन को कंपेयर करोगे एंड इफ आर एबल टू गिव अ प्रॉपर रीजन, एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर वीआरसी में प्रॉपर रीजन देना इज नॉट पॉसिबल. इट इज अ मिथ. वीआरसी में हर ऑप्शन के पीछे प्रॉपर रैशनैलिटी होती ही है. अंडरस्टैंड, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दैट इज आवर प्रॉब्लम. Otherwise, no answer will be irrational. Each and every correct answer will have a logic, and each and every incorrect answer will also have a logic कि आखिर वो गलत क्यों था. इसीलिए थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा. चलिए, can we take the next question now? So Kamla and the rest of the students, you people can tell me, do you agree with first option or not? और अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन से एग्री नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना. आई वॉन्ट टू लिसन टू योर रीजनिंग. चलिए, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है. ओके, थोड़ा सा पैराग्राफ भी टफ है. ओके, बिकॉज पॉसिबली ऐसे टॉपिक्स में स्टूडेंट्स में नॉट बी मच कंफर्टेबल. बट एनीवे, एवरीवन, आई एम गिविंग यू 30-40 सेकंड्स ऑफ टाइम. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलिए, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव जुड़ चुके हैं, प्लीज इंश्योर दैट यू पीपल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव द आंसर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना. एंड सभी स्टूडेंट्स स्ट्रीम को लाइक जरूर करो. एंड कल सुबह 11:30 बजे हम वापस मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी के लेकर. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5 क्वेश्चंस एंड दिस इज द सेकंड वन. Yes, come on. Yes, which is the correct answer? Okay, one student has given the answer. Come on, rest of the students who have joined the live now. Today we are going to have a session on para summary. This is question number 2 and I'm waiting for your answers. One student has given the answer, rest of the students. Okay, chalo. I'm going to discuss this question now. Listen to the explanation. ठीक है, समझना स्टार्ट करो. Much of the research concerning spatial working memory. Students, आपको पता है what is the meaning of this word? Okay, when I say spatial working memory, इसका मतलब है it actually talks about the memory which is related to the location of a particular object. Okay, the nearby ambience of that. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन से रिलेटेड जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इसको स्टूडेंट्स अपन कहते हैं स्पेशियल वर्किंग मेमोरी. So much of the research concerning spatial working memory has focused on its independence from other working memory systems. For instance, the influential model of working memory introduced by Baddeley and Hedge
emphasizes the separability of visual spatial and verbal storage mechanisms. Students, for instance, इसका मतलब है आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल हियर, और इस एग्जाम्पल का पर्पस क्या है? टू प्रूव द assertion which is given in this sentence. और स्टूडेंट, ये जो पहला सेंटेंस है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये कहता है कि मच ऑफ द रिसर्च कंसर्निंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेमोरी has focused on its independence from other working memory systems. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्पेशल मेमोरी वर्किंग मेमोरी है, ये बाकी वर्किंग मेमोरी से बहुत सेपरेट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, डिफरेंट होती है. अंडरस्टैंड? एंड वन एग्जांपल इज गिवन टू अस. द इन्फ्लुएंशियल मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी introduced by Bagley and Hedge emphasizes the separability of visual spatial and verbal storage mechanisms. ये दोनों separate होते हैं. Understand? Consistent with this model, there is now a substantial body of behavioral and neuropsychological evidence supporting a functional disassociation between spatial and verbal working memory systems. अब स्टूडेंट्स आप देखो, और जो रिसर्च हुई है, देखिए, एंड न्यूरोलॉजिकल एविडेंस, ये सब चीजें क्या प्रूव करता है? स्पेशियल मेमोरी एंड वर्बल वर्किंग मेमोरी सिस्टम्स में डिसएसोसिएशन है, डिफरेंस है, इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग है. अंडरस्टैंड? ऑल्दो द डाइसेक्शन ऑफ verbal working memory into its component processes has been productive, a description of the specific mechanisms that mediate spatial working memory has been more elusive. Elusive का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्लियर होना. अंडरस्टैंड? नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. दो चीजों पर मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक. ओके, मेरा जो मेन पर्पस है टू टॉक अबाउट स्पेशल वर्किंग मेमोरी एंड द अदर वर्किंग मेमोरी. इनमें डिफरेंस होता है, डिसएसोसिएशन होता है, ये दोनों चीजें इंडिपेंडेंट होती है. और इसके बाद स्टूडेंट्स, इस लाइन से I'm trying to focus that. I'm trying to focus upon, although the dissection of verbal working memory into its component processes has been productive. So what I mean to say is, verbal working memory को जब हमने dissect किया, break किया, various components में break किया, तो ये break करना was productive. लेकिन जब हमने similar चीज spatial working memory के साथ की, जब हमने उसको और specify करना start किया, जब उसे और डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया, जब उसके और कंपोनेंट्स को समझना स्टार्ट किया, तो रियलाइज हुआ कि इट हैज बीन मोर एल्यूसिव. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इफ एनीवन आस्क मी व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पैराग्राफ, देयर आर टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑन व्हिच दिस पैराग्राफ इज फोकसिंग. द फर्स्ट इज टू शो दैट दीज टू काइंड ऑफ मेमोरीज आर इंडिपेंडेंट. स्पेशल वर्किंग मेमोरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर वर्किंग मेमोरी सिस्टम्स. And the second important area is to talk about that when we dissect verbal working memory, the component processes, they are very much productive. So that dissection, that further getting into the details of that was productive in case of verbal working memory. But it was not productive, it was actually elusive in case of spatial working memory. So this is what the point happens to be. Now you people give the answer. चलो, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है. लेट मी सी. Enjoy has given the answer, Kamla has given the answer. Okay. चलो देखते हैं which is the correct answer. इस पूरे पैराग्राफ में स्टूडेंट जो पीपल सी, देयर आर टू इंपॉर्टेंट एरियाज, एंड आई थिंक अगर वो ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए, सॉरी ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए जो इन दोनों पॉइंट्स को कवर करे, तो दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर. Let us try to understand the various options one by one now. Just 1 second. Coming on the first option, enough evidence exists for the argument that spatial and verbal working memory mechanisms operate in completely different ways. The first option is absolutely correct, but partially. First option summarizes this part of the paragraph. Okay. लेकिन इसके आगे का जो पार्ट है, उस बारे में फर्स्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं कहता है. हो सकता है स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन फिर भी करेक्ट आंसर हो, बट एनीवे स्टूडेंट्स, एवरी करेक्ट आंसर इज बेसिकली रिलेटिव इन कैट. अगर मेरे पास और कोई बेटर ऑप्शन होगा, तो आई विल गो विद दैट.
but in case no other better option is there, the first option itself is okay, there is no problem at all. The only problem with the first option is it is partially correct. The other part of the paragraph, it is not focusing upon that. The first option से इतना सा कहता है कि yes, we have got many such evidences जो ये दिखाते हैं कि these two kinds of memories are completely different ways. Okay, second, while there is evidence to support the delineation, while there is evidence to support the delineation of spatial and verbal working memory mechanisms, component processes in the former are less understood. फॉर्मर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, स्पेशियल. तो यहाँ पर एनीवे स्टूडेंट्स मैंने मेंशन किया था एल्यूसिव. एल्यूसिव का मतलब ही होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर. तो अगर मैं लेस अंडरस्टूड कहता हूँ तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड इन केस ऑफ द लैटर यहाँ पर क्या होगा, वर्बल वर्किंग मेमोरी. जब भी स्टूडेंट्स अगर मैं दो नेम्स लेता हूँ तो जिसका नाम मैंने फर्स्ट लिया दैट विल बी कॉल्ड एज फॉर्मर, जिसका नाम मैंने सेकेंड लिया दैट विल बी कॉल्ड एज लैटर. तो स्टूडेंट्स सेकेंड ऑप्शन दो चीजों पर फोकस करता है. सबसे पहले इट सेज दैट ऐसे एविडेंस हैं जो इन दोनों टाइप्स को डिलिनिएट करते हैं. इसका मतलब है ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, डिफरेंट है. एंड सेकेंड स्टूडेंट्स इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द कंपोनेंट प्रोसेसेस इन द स्पेशल मेमोरी इज लेस अंडरस्टूड than in case of the verbal working memory. So I think students second option becomes a better choice than the first option. Because for second option mein first option is also included, at the same time this particular part is also included, and anyway students this particular part becomes the concluding part of the paragraph. तो मुझे लगता है इसको पूरी तरह से इग्नोर करके चलना is not justified. So if I compare the first and the second options, second option is indeed the correct answer. It is the comprehensive summary of this paragraph. I will go with the second option. And I think all the students, you people can get convinced with this. Coming on the third one. Spatial working memory is based on processes, okay, which are more difficult to understand. And those are verbal storage mechanisms according to new research. Anyway, students, third option पूरी meaning को change करता है. जिन भी बच्चों को लगता है कि third option is the correct answer, not at all. हमारा main purpose है ये बताना कि ये दोनों types different है, understand. तो थर्ड ऑप्शन ने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया वो पूरी तरह से मीनिंग को चेंज करता है. एंड आई थिंक ऑल द स्टूडेंट यू शुड बी इन अ कंडीशन टू अंडरस्टैंड. इतना वेरिएशन तो कम से कम तुम्हें समझ में आना ही चाहिए. अंडरस्टैंड. कमिंग ऑन द फोर्थ वन, न्यूरोसाइकोलॉजिकल एविडेंस कंफर्म्स द सेपरेटेबिलिटी ऑफ विजुअल स्पेशियल एंड वर्बल स्टोरेज मैकेनिज्म्स डिस्पाइट द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंपोनेंट प्रोसेसेस. फोर्थ ऑप्शन यहाँ तक बिल्कुल सही है, लेकिन इसके आगे despite the lack of information about their component processes, जबकि students we do have information about the component processes, especially about the verbal memory. Yes, we are not very clear about the spatial memory in this regard. So students, fourth option का ये जो part है this is totally wrong. ये कहना कि there is lack of information is wrong. There is lack of information about the component processes as far as the spatial memory is concerned. But as far as the verbal memory is concerned, yes, it is productive. So इसीलिए fourth option is not the correct answer, and I will go with the second option. अब मुझे बताओ students, अच्छा second option को वापस repeat करें. I think मैंने सब कुछ बता दिया. Second option दोनों चीजों पर focus करता है. ये बताता है कि yes, there is a difference between the spatial memory and the verbal memory. And second, the component processes of spatial memory, we are not able to understand easily. It is still elusive. Whereas if I talk about the verbal memory, yes, it is productive. So actually, second option becomes the correct answer because it covers both the aspects of the paragraph. Okay. Chaliye, I want your comment on this. फटाफट मुझे बताओ students. Do you agree that second option is the correct answer? Yes, all the students. And now we are going with the third question. Yes, everyone. फटाफट मुझे chat box में comment करके बताओ. Do you agree that second option is the correct answer? Perfect. Yes. If you people have any question, do ask.
लाइव ज्वाइन करने का यही सबसे बेस्ट एडवांटेज है. यस, यू पीपल कैन इंटरैक्ट विद अस एंड आई अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स, ये जो रीजनिंग मैं आपको दे रहा हूँ, एट द सेम टाइम यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे ऑप्शंस को कंपेयर करना. एंड सी, पेपर सेटर हमेशा पैराग्राफ का मीनिंग तो फिर भी समझ में आ जाता है. हम पैरासमरी में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? द बिगेस्ट मिस्टेक इज, कई सारे बच्चे कहते हैं सर हमें सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं. Okay, yes, indeed, students say, sir, all options seem to be one and the same. Whereas this is not the case. And this becomes the beauty of the question. Paper such as students अगर बहुत minor variations options में देता, yes, it's a fantastic test of your maturity, your logical understanding, your language ability. And if you people want to see yourself into the best of the IIMs, these kind of questions, at least you will have to solve. तो कैट में स्टूडेंट्स मान के चलो, ये बिल्कुल कैट लेवल का क्वेश्चन है. अंडरस्टैंड, if you are able to understand the reasoning, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे निकालने हैं. एंड सी वन मोर थिंग, अगर इस पैराग्राफ में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं तो फोकस ऑन सच एन ऑप्शन जो दोनों पार्ट्स को कवर करता है, rather than an individual part. Okay, and second, हमेशा ध्यान रखना, देखिए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अवर आंसर हैज टू बी राइट. डन. चलिए ऑल द स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं अपन. यस, क्वेश्चन नंबर 3. Coming on question number 3. Yes. Now this question is simple to understand. Let me see how many students are able to give the correct answer here. Okay. Hello, one student has given the answer. Rest of the students. I think, Kamla, you should revisit the question. Your answer is not correct. What is the main purpose of writing the paragraph? And ऐसे किसी भी पैराग्राफ में जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हो, वहां पर मेन पर्पस तक पहुंचना, that becomes quite challenging also. Okay, Himanshu has given the answer. Shivam has given the answer. Enjoy has given the answer. ठीक है, perfect. चलिए फटाफट एक बार मैं बता देता हूँ which is the correct answer. A common misconception about investing in India is that the country is politically homogeneous. The truth is that ease of doing business and the pace at which American companies can establish themselves in India is highly dependent on the Indian state in which they want to set up shop. In that sense, India is somewhat like the European Union, where different states offer considerably different experiences. Students understand, European Union का example लेना is not the main purpose. European Union का reference हमने इसलिए दिया so that we can explain what kind of situation is there in India. तो जैसे इंडिया में भी वेरियस स्टेट्स हैं और हर स्टेट के अपने लॉज हैं, एंड दैट इज द रीजन ये मान के चलना कि ये पॉलिटिकली होमोजेनस है इज नॉट करेक्ट. तो इसलिए जिन बच्चों को लगता है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इंडीड थर्ड इज नॉट द करेक्ट आंसर. यूरोपियन यूनियन को डिस्कस करना इज नॉट द पर्पज ऑफ द पैराग्राफ. But different states offer considerably different experiences. State laws differ in terms of labor law, environmental law, and property laws. This can affect, for example, land acquisition, terms for factory construction. So it is very important, especially for large projects, to be mindful of different state laws. Yes, एम्बुलेंस की आवाज आ रही है थोड़ी सी. हाँ, जब वर्बल एबिलिटी और आरसी करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बिल्कुल देखिए उन्हें लगता है सर अब बिल्कुल डिमोरलाइज हो चुके हैं. बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है. ओके, आप थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, अफर्मेटिव बनाओ, and then you see how wonders will happen to you. Yes, everyone. What is the main purpose? The main purpose is to show that
जिन्हें लगता है कि इंडिया पॉलिटिकली होमोजेनस है, इट इज नॉट द केस. And especially we are talking about the American companies. If they really want to invest in India, they will have to be extra careful and cautious. ये मान के चलना कि पूरे भारत में कहीं भी इन्वेस्ट करें सब चीजें वन एंड द सेम है is not the case. This is what the main purpose of the paragraph. Coming on the first one. The ease of doing business in India is misunderstood by American companies. Students, first option itself is not the correct answer. मुझे बहुत आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. Ease of doing business in India is misunderstood by American companies? Not at all. यहाँ पर तो इनफैक्ट आप अमेरिकन कंपनीज के बारे में ये कह रहे हो कि उन्होंने गलत समझा, जबकि स्टूडेंट्स द वेरी फर्स्ट लाइन इट टॉक्स अबाउट द जनरल मिसकंसेप्शन अबाउट इंडिया. It talks about the general misconception about India, that India is politically homogeneous. Okay, and the intent of the author is to caution the American companies. And moreover, students, misconception किसको लेकर है? That India is politically homogeneous. Misconception is not about ease of doing business. Okay, basically, first option is not the correct answer. Second one. The variations in state laws affects the ease of doing business in India, making it imperative. Imperative means unavoidable for American companies to understand those before setting up shop here. I think students, second option is indeed the correct answer, and this actually becomes the main purpose of writing the paragraph. The main purpose of writing the paragraph is to caution the American companies, is to say that India is not politically homogeneous. And if you are investing in India, you will have to be careful because each state has its own laws. Okay. इसलिए ease of doing business हर state में अलग अलग है, understand. तो second option कहीं ना कहीं इसके overall essence को capture करता है. Coming on the third one, India and European Union. Anyway, students, third option is not correct because EU को और India को compare करना is not the main purpose. Fourth, the misconception about India's political homogeneity hides the variation in laws across its various states. ये कहना कि this misconception hides is not correct. Yes, misconception is there and therefore we will have to be cautious. But misconception hides the variation in laws. This is not correct. Anyway, students, second option becomes the correct answer. Indeed, समझ पाए? Come on, फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ. And I'm happy to see that maximum students have given second option as the right answer. बहुत अच्छी बात है, fantastic. चलिए आगे बढ़ते हैं students. Yes. Now question number 4. It's a wonderful question. बहुत अच्छा question है students. I want you people to solve this question. हमने अपनी क्लास में भी इसको करवाया था. क्लास में तो खैर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करते रहते हैं. Okay, बट मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर You people give us in the comment box. सेशन को स्टूडेंट्स मैं यहीं पर रोकूंगा. मैं 2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं and I want you people to read both the questions and give the answer in the comment box. कल का जो लाइव सेशन मैं स्टार्ट करूंगा उसमें सबसे पहले I'll take this particular question, I'll discuss with you, okay, this particular question और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कल का टॉपिक. क्या करें? ऐसा करें? Is it okay? डन. बिकॉज मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बारे में जरूर समझें. चलो ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं करवा ही दूं तो ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल. इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होम असाइनमेंट हो जाएगा. चलिए लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. मेरे साथ करना स्टार्ट करो. इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन. नाउ सी, जॉर्ज R.R. Martin has always maintained that his fantasy novels have been influenced at least as much by history and historical fiction as by the traditional epic fantasy of writers like J.R.R. Tolkien. So students understand, जितना ये Tolkien से influenced है, उतना ही is influenced by history and historical fiction. I'm talking about George R.R. Martin, okay, and his fantasy novels. So they have been influenced at least as much by history and historical fiction as by the traditional epic fantasy. Aficionados, जो आपके बहुत बड़े फैंस बन जाते हैं, है ना? Aficionados का मतलब क्या होता है? A big fan of a writer, okay, of an artist.
किसी भी चीज से चिपक जाना, जो स्टिक हो जाता है, उसे वही अच्छा लगता है, इसको अपन कहते हैं aficionados. To understand, aficionados know that his novels are loosely based on the Wars of the Roses, a vicious का मीनिंग पता है, cruel series of battles of succession that took place in 15th century England. It would probably surprise several generations of British school children to learn that the dynastic politics, इसका मतलब है I'm talking about the 15th century battles of succession. Okay, पूरी सीरीज ऑफ battles of succession, जिसको एक्चुअली कॉमनली बोला जाता है वॉर्स ऑफ द रोजेस, और इसके नेम के पीछे भी पूरी स्टोरी अंडरस्टैंड. So it would probably surprise several generations of British school children to learn that the dynastic politics of the 1400s, that means the 15th century, could be transformed into anything coherent, which means logical, let alone entertaining. Students, अब देखो, what is the meaning of this line? इस लाइन का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश स्कूल चिल्ड्रन की कई जनरेशंस विल बी वेरी मच सरप्राइज्ड. ओके, व्हाई? कि ऐसी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द 1400s के बारे में ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, या उन पॉलिटिक्स को या वॉट एवर थिंग्स हैपन उसे ट्रांसफॉर्म करना एक बहुत ही लॉजिकल एंड एंटरटेनिंग स्टफ में. तो दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन. ओके, तो ब्रिटिश स्कूल चिल्ड्रन, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, दीज चिल्ड्रन दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन दैट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, बट स्टिल आर मार्टिन ने उस पर जिस तरह से फैंटेसी नॉवेल्स लिखी है, ऐसी चीजें जो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, उन चीजों को भी दिस पर्टिकुलर नॉवेलिस्ट मेड कोहेरेंट एंड एंटरटेनिंग, एंड दिस एक्चुअली सरप्राइजेस generations of British school children. ब्रैकेट में क्या लिखा है? It is worse than the Wars of the Roses. Young Lucy Pevensey cries in dismay when someone tries to explain a particularly complicated bit of Narnian history in Prince Caspian. She speaks for many. Anyway, students, ब्रैकेट में जो लिखा है उससे ये साबित होता है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, for them history is not much interesting. और एक बच्चे का जो स्टेटमेंट है उसे कोट करते हुए the author says that generally the school children are not interested in these kind of dynastic politics and these kind of historical events. But still, these children will be surprised because the way Martin created the fantasy novels based on these dynastic politics. So Martin actually made these novels very much logical and entertaining also. So that is the main purpose of writing the paragraph. अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, व्हिच इज द बेस्ट आंसर? मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब मैं चाहता हूं यू पीपल गिव द करेक्ट आंसर. यस, आफ्टर गिविंग दिस एक्सप्लेनेशन, आफ्टर लिसनिंग टू दिस, इफ यू पीपल आर एबल टू गिव द करेक्ट आंसर, इट्स फैंटास्टिक. चलो, एक आंसर मेरे पास आ चुका है, फोर्थ ऑप्शन. कम ऑन, बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर आंसर? वन आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. कम ऑन, द अदर स्टूडेंट्स. ओके, okay. Let me read the fourth option. Let me see whether it is correct or wrong. Though George Martin's fantasy novels are inspired by the Wars of the Roses, battles of succession in 15th century England, British school children do not find them entertaining. जिन बच्चों का आंसर फोर्थ ऑप्शन है, it is totally wrong. Why this option is wrong? Because यहाँ पर लिखा है British school children do not find them. ये दम किसको रेफर करता है? नॉवेल्स को. जबकि स्टूडेंट, जो पीपल डू अंडरस्टैंड, ब्रिटिश स्कूल चिल्ड्रन डू नॉट फाइंड दोज बैटल्स, द हिस्टोरिकल इवेंट्स, द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग. जबकि स्टूडेंट्स, फोर्थ ऑप्शन में बहुत ब्यूटीफुली हमने क्या किया? ब्रिटिश स्कूल चिल्ड्रन डू नॉट फाइंड द नॉवेल्स एंटरटेनिंग. जबकि स्टूडेंट्स, ब्रिटिश स्कूल चिल्ड्रन सरप्राइज क्यों थे? यार, ऐसे बोरिंग टॉपिक पर भी कोई इतनी इंटरेस्टिंग नॉवेल्स लिख सकता है क्या? दैट वाज द मैटर ऑफ सरप्राइज. जिन बच्चों को लगता है कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आई गेस आफ्टर लिसनिंग टू माय पर्टिकुलर रीजन, यू वुड बी वेरी क्लियर दैट फोर्थ ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर. एंड स्टूडेंट्स, देखिए, बाय टेकिंग दिस क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पैरा समरी में हाइट्स ऑफ रीजनिंग क्या हो सकती है, and how you people have to be very much smart as far as the logical and the language ability is concerned.
You will have to be very careful about the pronouns. You will have to be careful about कि ब्रिटिश स्कूल चिल्ड्रन इसे बोरिंग मानते हैं, वो फैंटेसी नॉवेल्स को बोरिंग नहीं मान रहे हैं, वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को बोरिंग मानते हैं, और वो सरप्राइज इसीलिए हैं ऐसे बोरिंग टॉपिक पर भी इतना इंटरेस्टिंग कोई लिख सकता है क्या? दैट इज द पॉइंट. The correct answer to this question is first option. So George Martin's fantasy novels have been inspired by the Wars of the Roses, 15th century English battles of succession. Those school children might not consider the topic interesting. The topic interesting. Yes, absolutely. The topic was not interesting. Got it? शिवम, तेरा आंसर मैंने देख लिया. बी और सी में तो कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर फर्स्ट है. अब क्या बी और सी तो एनीवे किसी भी एंगल से सही नहीं होगा. मैं बता देता हूँ क्यों. जॉर्ज मार्टिन्स फैंटेसी नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन हिस्ट्री as much as fantasy, though their historical background is not particularly entertaining. For whom? For the British school children. Anyway, students, मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन काफी हद तक ठीक है, but when I compare 1 and 2, 1 is anyway a better choice. Third one, British school children such as Lucy Pevensey would be surprised. Third option is anyway not the correct answer, because when I have given the quote of Lucy Pevensey, the basic objective is not to talk about this particular student. The basic objective was, on the basis of his or her quote, to explain the mentality of the British school children. So that is the basic purpose. अगर अपने को लगता है कि लूसी पेवेंसी को डिस्कस करना ही मेन पर्पस था इस पैराग्राफ का, अगेन आई वांट टू वार्न ऑल द स्टूडेंट्स, कैच द मेन आइडिया. डोंट रन आफ्टर द एग्जांपल, डोंट रन आफ्टर any instance which has been quoted, okay, to substantiate something. This is something which you will have to be careful in. Okay, चलिए, so all the students, I hope मजा आया होगा. ठीक है, कैसा लगा ये पूरा क्वेश्चन? इसे वापस से पढ़ना, and this becomes question number 5, and you people have to give the answer to this question in the comment box. So anyway, students, by this the session gets over. Thank you so much for being with us, and we people are going to meet tomorrow at 11:30 once again, and we will take some more interesting questions on verbal ability. And if you really want me to take more questions on any particular area, do let me know. 11:30 every Wednesday, Thursday and Friday को students हम लोग बात करेंगे English for Snap and Math. And students, when I talk about English for OMETs, yes, the approach is totally different. There, vocab plays an important role, grammar plays an important role for OMETs as well. और इन सब की तैयारी हमें पैरेलल करना स्टार्ट करना है, ठीक है. एंड ऑल द स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एस कैट की टेस्ट सीरीज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं. आई मोटिवेट एवरीवन कि आप एस कैट की टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करें, ठीक है. विद वीडियो सॉल्यूशंस यू पीपल आर गोइंग टू हैव इट, so please take this as well. So see you soon, and अच्छा लगा हो वीडियो, पूरी लाइव स्ट्रीम को आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें. See you tomorrow once again at 11:30. All the best. Yes, thank you everyone. Thank you Shivam, Srinjoy, Kamla, Sneha, Himanshu, everyone.